Yes, students. So this is our part B of lecture number 9. So in this part, we will discuss about step deviation method to calculate the arithmetic mean in continuous series. So students, when class intervals are when class intervals for all the classes in a continuous series are of same magnitude or width, then shortcut method can be further simplified by the step division method. अगर आपके पास जो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लासेस गिवन हैं, जितनी भी क्लासेस गिवन हैं, जो क्लास इंटरवल है उनका अगर उसका सेम मैग्नीट्यूड है, सेम वेट है, तो वहाँ पर स्टेप डेविएशन जो मेथड है आप उसको और भी आगे क्या कर सकते हो, उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. इट मीन्स आपका यहाँ पर और ज़्यादा टाइम जो है वो कैलकुलेट करने में, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने में सेव हो जाता है. So students, now we will discuss about all the steps that we take in the step deviation method to calculate arithmetic mean. So yes, steps of step deviation method. So first step is calculate the midpoint of each class interval and denote it by m. Okay. Second is decide any one midpoint as the assumed mean a. Yes, students, all these points we have already discussed in our part number A in the shortcut method. Okay. So in the third point, calculate the deviation D of midpoint from assumed mean A, that is calculate m minus A. Next is fourth step is find out the common factor C. Yes, अब थर्ड पॉइंट के बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है ये फिर आगे स्टेप डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं. सो फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम डी. जो आप यहाँ डी डेविएशन हमने कैलकुलेट किया, उस डेविएशन से हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर सी. एंड कैलकुलेट डी डैश. डी डैश मीन्स स्टेप डेविएशंस and which is d by c. यानी we use d by c and calculate the step deviations, that is d dash. Now next step is multiply step deviation d dash with frequency f. Yes students, in the discrete series we multiply the deviation d with frequency f, but in step deviation method we multiply d dash, means step deviations, with the frequency f and obtain the total to get summation f d dash. Now the next step is find out the total number of items, and you know that this is summation f sum of frequency. Now students, apply the formula in step division method. So x bar, the formula is x bar is equal to a plus summation f d by summation f multiply c. What is the difference? So यहाँ पर देखिए summation in shortcut method summation f d we will apply, but in step deviation method we will take summation f d dash. d dash means step deviations, and एक इसमें क्या, एक इसमें एक्स्ट्रा आया कॉमन, मल्टीप्लाई सी. कॉमन फैक्टर जो है उससे हमने और मल्टीप्लाई करना है. सो स्टूडेंट्स, हियर एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, सी इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, दैट इज डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट्स फ्रॉम मिड पॉइंट्स एम फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एंड डी डैश इज इक्वल टू स्टेप deviations from assumed mean divided by common factor, and summation f d dash is equal to sum of the product of step deviations d dash with respective frequency f, and summation f, you know that total number of items. Now students, we take an example to calculate the arithmetic mean in step deviation method. So this is our series, marks x 0.5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. And this is our frequency 2, 8, 6, 10, 4. And you know that first of all we calculate the midpoint, mid values
Yes, 0.5, you know, mid values. Yes, we calculate it by L1 plus L2 by 2. So yes, this is our 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 and 22.5. Now we assumed 12.5, the value we assumed me. Now we calculate d deviation by m minus a. Okay, so this is a minus 10. Yes, 2 minus 5, 2, so 2.5 minus 12.5 minus 10, 7.5 minus 12.5, this is minus 5. Next is 0, next is plus 5 and then plus 10. Okay, so now students, we take a common factor in the series of deviation. So yes, क्या common factor आएगा? आई थिंक 5 जो है 5 वैल्यू इस सारी सीरीज से डिवाइड हो जाएगी. सो वी कैन टेक द कॉमन फैक्टर 5. सो एंड डी डैश यानी स्टेप डेविएशन वी विल कैलकुलेट बाय m माइनस ए, मतलब d बाय c. सो d बाय c मतलब माइनस 10 बाय 5. सो दिस इज माइनस 2, देन माइनस 5 बाय 5 1, देन 0, देन 1 एंड 2. सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अब बिल्कुल ईजी हो जाती है कैलकुलेशन करनी, मल्टीप्लिकेशन करनी, सब ईजी हो जाएगा. सो नाउ वी कैलकुलेट द एफ डी डैश. सो दिस इज आर फ्रीक्वेंसी, दिस इज आर स्टेप डेविएशंस. सो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4, then minus 8, then 0, 10, 8. Okay, this is minus 12 and this is the plus 18. So plus 18 minus 12, so summation fd dash is equal to plus 6. Okay, then summation f is equal to 30. Now students, we apply the formula to calculate the arithmetic mean in a step deviation method. So step deviation method, you know that what is the formula? X bar is equal to a plus summation fd dash by summation f multiply c. Okay, then yes, a is equal to 12.5 plus summation fd dash is equal to 6 by 30 multiply 10. Sorry, 5, common factor is 5 na, 5. Okay, so this is yes, one. So now 12.5 plus 1 is equal to 13.50 marks. Yes students, so from this we calculate the arithmetic mean in step deviation method. So students, I think it is clear now how to calculate the arithmetic mean by the shortcut and step deviation method. So that's all for today. Have a good day.